channel. And today's vlog is gonna be really amazing, and today's vlog is gonna be really special for me and for the Blinks. Yes, for the Blinks specifically. It's only because today is 7th August, and seriously, I'm so excited. Like seriously, I've been planning it since 1 week. Seriously, I've been planning this day since 1 week. And let me tell you what, today is Blackpink 9th year anniversary. Yay! Like I am seeing them since when I was a kid. 5 years ago in 2019, I have got to know Blackpink. In 2019, my mom was stuck in Kenya. It's only because that Corona tha that time, and that time there was a lockdown, and mama stuck हो गई थी, and I don't have anything to do क्योंकि मेरा favorite काम मम्मा से बातें करना होता था, and I have nothing to do that time. So like everybody talk about Blackpink and BTS, and I was like, who is Blackpink? Who is BTS? Let me just find out. I have seen the one song How You Like That has been released in 2020. My first song was Lisa's Money and Boombaya. Then I have listened to How You Like That, and How You Like That was my first song that I've been listening, and I got addicted to Blackpink. Like I have started searching about Blackpink, their age, their nationality, their religion, their like what they do, how do their concerts have, like this kind of thing. I have been searching it. Then 1 year after, I like in 2020 or 21, I was a baby Blink. Like I've listened almost every song, then I memorized it, then I just liked the vibe, I danced into it, I enjoy it, और ऐसे मैं बन गई Blink. So yeah, I am happy. यार देखो, कुछ लोगों को ये बहुत चाइल्डिश लगेगा, बट बहुत लोगों को बहुत सारे क्रिएटर्स पसंद है. जैसे अगर आपको मैं पसंद हूँ ना, तो आप हर छोटी चीज़, आप मुझे बर्थडे विश करते हो, राइट. लेकिन मैं बहुत पागल हूँ यार, मैं बहुत पागल हूँ ब्लैकपिंक के पीछे. जैसे आपका कोई मेंटर है, आपका कोई सामने वाला स्पेशल है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी इंस्पिरेशन है, तो मेरी भी ब्लैकपिंक इंस्पिरेशन है. आई लव द वे दे treat people. I love the way they just love their fans, because can't you even see that how much Lisa donated to Palestine? Lisa has donated, like she has held in 2024, she has held a concert, and I don't know, Golden Award, I don't know what that award ceremony is called, but she has won an VMA, but she has not taken the money. She donated that money to Palestine people. I really appreciate that. Seriously, the whole Blackpink support Palestine, and this is have been touched my heart really, like really, it touched my soul. So yeah, this is my story. How am I a Blink? How it start? How it begins? Yeah, it's childish to do this kind of things, but I just love to do this kind of thing. I have nobody, I have no friends, but yeah, only Elam. She also is busy in her work, and I can't have time to do that. But my favorite work is to work out on Blackpink songs, to listen Blackpink, to see their series, and to see everything. Like, and today I have prepared a little surprise for myself. That is, I've prepared a birthday celebration in my house. I will celebrate that birthday alone with my Blackpink girls, and I have decorated it really beautifully, because I just love Blackpink. Diehard fan. I'm the diehard fan. And seriously, let me tell you a story of my mother. That once I was going to PR at Safari Park at Jumbo Jump, and I was just making some videos, and I was like, Mama, how are you? मतलब मम्मा क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही. खैर मैं आई मम्मा के पास, and suddenly someone, like they were like talking to each other, and I was like, who is she, Mama?
Then Mama said, she is my diehard fan, and I'm saying, whoa, after these 10 to 12 years, आपके पास एक diehard fan आई है, and she was like, हाँ यार मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, and I have interviewed, imagine seriously, I have interviewed that lady that, how do you know Mama? How do you just, or seriously, this is the same story with me, the same story between her and me. Like she have same desperation towards Mama, just how I am desperate to Blackpink. Same. And after 20 to 15 years, I was like, how can anybody remember that celebrity after 15 to 20 years? Even she is not famous anymore. And I was so glad. And बहुत मजे की बात, उनकी daughter was my fan. Like I was super happy and emotional at the same time, but it doesn't matter. This is why I love you guys, because you are also desperate to meet me. I have seen a lot of comments that you have written that I want to meet you. Yeah, inshallah. I hadn't meet Blackpink. I hadn't go to their concert, but yeah, I go to their concert. Like I just watch it in a cinema, and seriously, it feels like I'm in their concert, because there are a lot of blinks there. I just love how they're just staring. They're just like, even they can't hear our voices, but yeah, I just feel so emotional. So let's go. चलते हैं. It's only 1 hour or half an hour left, और मेरा favorite drama भी आने वाला है कुछ देर में. 12 o'clock को ही आएगा. Seducing Drake Palma. जिसको Seducing Drake Palma पसंद है, कमेंट्स. और जिसने अनमुत्यांग सेक्शन नहीं देखा, हर किसी ने देखा है अनमुत्यांग सेक्शन ही, कोई ये नहीं कह सकता मैंने नहीं देखा. ओके जेंसीज, नीचे जाओ और जिसको ब्लैकपिंक पसंद है अटेंडेंस लगवाओ, और हैप्पी बर्थडे ब्लैकपिंक जरूर कहना. चलो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको अरेंज. ओनली हाफ एन आवर रहता है एंड आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग, तो चलो जल्दी से प्रिपेयर करते हैं. And I have been ready this beautifully only because for my girls and for Blinks. Okay, the Blinks, I love you so much, and thank you for supporting the right girls. Thank you. Mwah, love. Wow, mama technique. Guys, अब मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास क्या क्या है. This is प्यारी सी कैंडल. This is cookie. This is my cute cake. मैंने खुद ने किया था. मम्मा कह रही थी बेंटो केक ले आओ बड़ा वाला. मैंने कहा नहीं, मुझे कप केक चाहिए. एंड हेयर इज प्यारा सा क्यूटू, तो प्यारा है गाइस सारी चीज़ें. एंड दिस फेरी लाइट्स, एंड ये भी है गाइस माय ब्लैकपिंक की पिक्चर. फ्लावर्स उनके लिए, मुझे नहीं पसंद लेकिन उनके लिए, और ब्लिंक्स के लिए. यहाँ पर मैंने क्यूट सी फोटोग्राफ्स लगाई हैं. एंड रुकिए गाइस, मैं इसको थोड़ा एस्थेटिक शॉट में लेके दिखाती हूँ. लुक एट दिस. हाँ जी, ईमान ने भाई बहुत प्यारा सा डेकोरेट कर लिया है. यहाँ पे छोटा सा जो चीजें अवेलेबल थी घर में, वो बुके भी मंगा लिया है, छोटा सा केक भी, और ईमान ने अपने रिफ्रेशमेंट का सामान भी. और ये सिर्फ आपके लिए, ब्लिंक्स के लिए, और ये प्यारा सा बुके फॉर माय ब्लैकपिंक गर्ल्स. आई लव यू OT4. love you so much. You're being so big and old. I can't even believe you. Yeah, I know it's childish to do these things, but it's an emotion for me. It's not the childish thing. Let's do it. I don't know what the heck. It's 11:56. Relax, man. You know what? कि अभी मैं चेक करने वाली हूँ कि if my girls are live or not. If they are live, मेरा तो दिन बन जाएगा. ईमान ने इतने सारे कार्ड्स ब्लैकपिंक के सारे यहाँ रखे हुए हैं, और कुछ दीवार पे भी लगाए हैं. और गाइस ये बताऊँ, ये जो कार्ड्स मैंने, इसकी भी स्टोरी है. दिस कार्ड आई हैव, मैंने अपनी खुद की इनकम से लिया था. लाइक व्हेन मेरी ईदी 3 years ago मैंने ये लिए थे एट कोर्चेला. 2019 की कोर्चेला की वीक 2 की है ये. एंड दिस आई हैव बीन टेकिंग द मनी. I have taken this money from my own income that I have earned on Eid.
I really love the memory that I have 700 का है, then मतलब like I've ordered it और मुझे बड़ा अच्छा था. मैंने guys मम्मा से छुप के ऑर्डर किया था. बड़ा अच्छा ईमान ने भी आज ये खुद किया है सारा माशाल्लाह से. मैंने कोई हेल्प नहीं की. मैं कहती रही कि मेरे रूम में आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ. इसने कहा नहीं, कोने पे जाऊंगी, बिल्कुल कोई ना हो वहाँ पे. ये छोटे से पता है क्या, अभी मैं यहाँ पर ये सारी enjoy करूंगी. इसके बाद मुझे एक seducing ड्रिंक पार में एक सीरीज लगाऊंगी and I will enjoy. जी गाइस, ब्लैक पिंक 9th ईयर एनिवर्सरी है और ईमान भाई बहुत एक्साइटेड थी. ईमान ने बस झट इतनी जल्दी में ये सब अरेंज किया है. और ईमान को अब चाहिए थोड़ी सी प्राइवेसी. ईमान अकेले में कुछ ड्रामे देखने हैं, ब्लैक पिंक्स को देखना है, बैठ के एंजॉय करेगी अपना फूड. तो चलो अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं, तुम बैठो एंजॉय. A few moments later. तो गाइस अब मैं ये खाऊंगी और पता है केक आ गया. मैं फिलअप आप ही ले आई केक. आप ही ने कहा कि चलो ईमान को. ओके गाइस, तो अभी मैं सेड्यूसिंग ड्रिंक पाल्मा देखूंगी और उसके बाद आई विल ईट दीज थिंग्स. तो चलो अल्लाह हाफिज.